मिरंजानी ट्रैक का स्टार्टिंग पॉइंट नीचे गली चर्च से नीचे की तरफ एक रोड के साथ कनेक्टेड है। Around 1.5 किलोमीटर के ड्राइव के बाद you can get to the starting point of this beautiful and scenic trek. ट्रैक के स्टार्टिंग पॉइंट पर पहुंचते ही I had to face severe rainstorm, but since I was there for adventure, so I had to start the hike. Miranjani is the highest peak of Galiyat region. The elevation of this peak is around 3000 meters. इस ट्रैक की कुल लंबाई करीब 7 किलोमीटर है. The entire track is loaded with pine trees and is well balanced. ट्रैक काफ़ी सीनिक है और मुश्किल से काफ़ी अलग वाइब्स आती हैं. Although track looks quite similar, but vibes are different. हर इलाके का एक अपना चार्म होता है, अपनी एक एम्बियंस होती है. सो उसके मुताबिक एंजॉय करना चाहिए और मज़ीद एक्सप्लोरेशन करते रहना चाहिए. सो मैं अभी 10-1 मिनट का ब्रेक लूँगा और देन आई विल मूव अप. यूँ तो बारिश अल्लाह की रहमत होती है, बट इफ़ इट हैपन्स ड्यूरिंग अ हाइक देन इट कैन पुट यू इन अ लॉट ऑफ ट्रबल. Despite a fall inconsistent train, I was able to get to the top. टॉप पर पहुंचते ही मुझे सबसे पहले अपने पर थोड़ा गुस्सा भी आया कि मैं यहाँ क्यों आया. शायद इसी वजह से I got bit carried away और सही तरीके से कैंप पिच करना भूल ही गया. तो जी दिन भर की खजल ख्वारी के बाद आखिर मिरंजानी टॉप पहुंच ही गए हैं और कैंप मुझे समझ में नहीं आया. बिल्कुल मैंने नया बाय किया और आई डोंट नो इसके रॉड शायद बड़े हो गए हैं या क्या सीन, आई डोंट नो. सही तरीके से पिच नहीं हुआ. अब आती है हमारे इस चिकन की बारी. आई गेस इट वुड बी बेटर कि अगर मैं इसको खोल के गुड मॉर्निंग ऑल. दिस इज सैयद साद अली. उठ के आपको बाहर के नज़ारे करवा दूँ कि हाउ डज़ इट लुक लाइक फ्रॉम आउटसाइड. बहुत ही खूबसूरत नज़ारा. यू कैन सी राइट ओवर देयर इज़ दैट फेमस लैंडमार्क ऑफ मिरंजानी पीक. हियर इट इज़ दैट पॉल. सूरज जो है अपनी आबोताब के साथ चमक रहा है, तो मेरा ख्याल से आइडियल मौसम है हाइकिंग के लिए भी. तो आई थिंक आई शुड गो फॉर डगरी बंगला ट्रैक. लेकिन पानी का शदीद इशू है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया. पानी सिंबल ऑफ लाइफ आई वुड से. उसके बगैर नामुमकिन है कि क्योंकि काफ़ी डाउन है वो. अप स्ट्रीम तो कोई है ही नहीं यहाँ पे, तो मुश्किल हो जाएगा. खैर एनी हाउ लेट मी चेक.
चिप्स हमारी रेडी है। मेरे ख़्याल से ये काफ़ी हद तक करारी हो चुकी है और घर की तरह मैं गैस ज़ाया करके उसका मज़ीद लाल नहीं कर सकता। ये मैंने चिप्स निकाल ली है अपनी छोटी सी पॉकेट ट्रे यू कुछ से, और यहाँ मुझे कुछ छोटे से लोकल्स मिले हैं, उनके साथ जो है मैं आगे डगरी बंगला इंशाल्लाह करने लगा। पहले ये चिप्स खा लेते हैं। ये छोटे से भाई यहाँ के लोकल है। कितने टाइम लगेगा डगरी बंगला को? सर डगरी बंगला को बाहर लग जाएंगे 2-2.5 घंटे। 2-2.5 घंटे। और वहाँ पानी मुझे मिल जाएगा ना? पानी मिल जाएगा। चलो ठीक हो। अब जो है ये चिप्स खा लेने के बाद अपना सामान पैक शैक करेंगे। निकले डगरी बंगला। रास्ता पता है? जी सर। कितनी देर लग जाएगी? 2-2.5 घंटे। तो तुम पहले कभी गए हो? जी सर, मैं रूटीन में आ गया। चलो गुड हो गया। अभी फिर हम निकलते हैं बैग शैक पकड़ के, और बड़ा ही सीनिक ट्रैक होने वाला है इंशाल्लाह। तो जी ये मैंने अपना ट्रैक बाकायदा स्टार्ट कर दिया इसने। So it seems like we are halfway through. डगरी बंगला पहुंचने पर आई वॉज सुपर एक्साइटेड। इट वॉज लाइक अ ड्रीम कम ट्रू फॉर मी। बंगले के अंदर के हालात मेरी सोच के बरक्स निकले। आई थॉट इट वुड बी वेल मेंटेन्ड, बट बंगला अंदर से खंडरात के मंजर पेश कर रहा था। बट एनी हाउ इट टर्न्ड आउट टू बी अ गुड कैंपिंग स्पॉट राइट इन टू द मिडल ऑफ द फॉरेस्ट। डगरी बंगला के अंदर के हालात किसी खस्ता हाल इमारत का मंजर पेश कर रहे थे। The history of Dagri Bungalow dates back to British rule. The
It must be a masterpiece of British architecture, the way its framework is being formed. डगरी बंगला के फॉरेस्ट गार्ड की मदद के बाइस मैं यहाँ कैंप सही तरीके से पिच करने में कामयाब हो गया। कैंप पिच कर लेने के बाद अगली बारी खाना तैयार करने की। अपने हाथों से बनाई हुई है, भी काफ़ी जमी हुई है। गलती मैंने ये की कि पहले ब्रेड फ्राई कर लेनी चाहिए। करीब 7 किलोमीटर की हाइक और ओवरनाइट कैंपिंग स्टे के बाद सुबह का ये नज़ारा इंतहाई दिलफरेब था। थकावट के बाइस दही से ही मैंने नाश्ते का गुजारा किया। After a day-long rest, it's time to go back home. So it's time to say goodbye to Dagri Bungalow. काफ़ी नैरो ट्रैक है ये भी। डगरी बंगला से कोटली गांव का रास्ता करीब 10 किलोमीटर है। It took me around 2 to 3 hours of hike to get to that point. Dagri Bungalow से कोतली गांव तक का ट्रैक it was even more beautiful than the track from NathiaGali to Miranjani top. बेला आखिर 3 घंटे की हाइक के बाद कोतली गांव पहुंचने पर मैंने सुख का सांस लिया। It took me around half an hour of jeep ride that dropped me off at Hanoi. From there, I took a private car and headed back to NathiaGali.
Having proper camping gears and food stuff had made this trip even more memorable. Now I'm heading back to my hometown Lahore, and it's time to say goodbye until next adventure.